वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं, मैं हूँ गौरव दयाल, बीट फैक्ट्री से और बीट स्किल सॉफ्टवेयर से और बॉलीवुड साउंड से, थ्री कंपनीज। एनीवे, पहली बात तो थैंक यू फॉर रियली अप्रिशिएटिंग द न्यू साउंड ट्रैक, 80s टाइप, एक्शन फिल्म साउंड ट्रैक म्यूज़िक जो मैंने अभी रिलीज़ किया था फेसबुक पे। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू द सेशन। सो मुझे पता था कि यू विल बी क्यूरियस एंड आप जानना चाहोगे कि इसमें क्या साउंड्स यूज़ हुई हैं और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो आई विल शो यू माई लॉजिक सेशन फॉर दिस। अब इसमें बेसिकली सिर्फ दो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं। वन इज़ रेट्रो हिट and the other one is retro keys. So retro hit basically 80s drum sampler machine है जो again मैंने खुद बनाया है for beat skills. It's available for purchase on beat skills website. Retro keys is a new keyboard sampler. So इसके अंदर सारे पुराने vintage digital और analog keyboards की important sounds हैं. So there are about 100 patches, sampled patches जिसमें multi velocity and multi layers हैं. So it really sounds realistic like real analog synthesizers and digital synthesizers because it is captured from real synths that I own and certain other synths that I found at my friend's place and all of that, जिनको मैंने सैम्पल करके पैचेस बना के वो पैचेस बनाई जो एक जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप 80s का बैकग्राउंड स्कोर सुन रहे हैं किसी एक्शन फिल्म का फ्रॉम हॉलीवुड। सो माई इंस्पिरेशन फॉर दिस म्यूजिक हैज़ बीन पीपल लाइक जॉन कार्पेंटर जो हु मेड वेरी हॉरर स्कोर्स विद सिंथेसाइजर्स, बट ऑल्सो many other composers जिनको मैं contemporary composers and older composers जिनको मैं सुनता हूँ। बट दिस इज़ लाइक श्वार्ज़नेगर कमांडो कॉल इट और दैट काइंड ऑफ साउंड ट्रैक। मैं बातें अपनी बंद करूँगा एंड आई विल शो यू, पहले तो ट्रैक सुनेंगे देन विल गो पीस बाय पीस एंड सी व्हाट द डिफरेंट एलिमेंट्स आर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दी साउंड्स आर पुट टुगेदर। सो आई जस्ट प्ले इट फॉर यू। So as you can see इसमें basically 16 tracks use हुए हैं of MIDI. Let's come to the first track. So this is basically sync. I'll just show you the instrument. So retro keys में से analog sync is one of the patches which I'm using. Again, this virtual instrument is available on Beat Skills. अभी ये कुछ दिनों में आने वाला। By the time I think you see this video in a couple of days, this will be out for purchase. You can get it. So इसके अंदर 100 patches हैं. Let's listen to this sound specifically कि कैसी sound है। So that's that main sound from there. Then let's come down to the bell sound. Basically ये sound जो है it's automated because इसमें panning चल रही है. You can see there's some panning that I've done. So then again, this is a bell sound from Retro Keys. So it's called E-Piano Chorus. This is one of the sounds. लेकिन इसमें additionally मैंने क्या किया है, I added a little delay. तो मैंने Logic का standard delay इसमें डाल रखा है. And if I switch this off and also मैंने इस पे that thing हमारा अपना दूसरा plugin for the chorus sound डाल रखा है. So original sound is like this, which is still very. लेकिन आप सोच रहे हो कि मैंने इसको डल क्यों कर दिया? I made it chorus and dull because इसमें 3 bell sounds हैं इस track में. So I wanted that all of them work together. So ultimately एक one side pan हो जाती है, दूसरी side pan आती है. We'll listen to the other bell sounds also. There's the big bell.
वेरी कॉमन साउंड. दिस वाज आल्सो इन डेडपूल, अगर आपने सुना है, लेकिन ये डेडपूल की साउंड नहीं है. बेसिकली ये एक विंटेज सिनक्लेवियर सिंथेसाइजर, FM उनका एक द बीस्ट करके एक सिंथेसाइजर था, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, एंड वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. तो उसकी साउंड थी. इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द सॉन्ग कॉल्ड बीट इट बाय माइकल जैक्सन. एंड देन तब से मेरे बचपन से वो साउंड मेरे जहन में, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू यूज इट इन दिस वन. सो दिस इज द सेकंड बेल. देयर आर 3 bells बेसिकली. थर्ड इज द आइस बेल. अगेन ये साउंड इज फ्रॉम Retro Keys, as you can see. There's a third bell sound from Retro Keys. अगेन इन दिस साउंड मैंने क्या कर रखा है, हाईमिट्स थोड़े से काट रखे हैं, सो दैट ऑल द बेल्स सिट टुगेदर. अगर 3 बेल्स जिनमें बहुत सारे हाईमिट्स होते हैं, 5 किलोहर्ट्ज के करीब साथ में होंगे, तो वो अक्यूमुलेट होकर बहुत ज़्यादा 5K कान में चुभना शुरू हो जाता है. सो जस्ट टू कीप इट लिटिल बैलेंस्ड एंड लो. एंड देन इफ यू कैन सी आई हैव पैंडेड ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, आई डोंट नो हाउ यू विल बी हियरिंग इट, ऑन वन ऑफ द साइड्स, ताकि इट कीप्स क्लियर. अगर मैं तीनों बेल्स को साथ में बजाऊँ तो यू कैन सी कि देयर इज क्लैरिटी. तो सारी साथ में दे एग्जिस्ट. एक में डिले है, एक में द फर्स्ट वन अगेन आई हैव मेड स्वीट बाय यूजिंग दैट थिंग कोरस. अगेन ये प्लगइन इज अवेलेबल ऑन beatskills.com. आप वहाँ जाके देख सकते हैं, इस प्लगइन को ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं. सो इट एड्स दैट कोरस. आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑसम कोरस दैट वी मेड. आई पर्टिकुलरली लाइक इट. देन देयर इज अ लीड साउंड जो आप सुनते हैं. This is just one sound actually. It's sounding very thick. Like this is one sound. Again, another patch from 80s pad, which is 80s attack pad from Retro Keys. So like I said, there's just super programming in these soft synths. Then we have a bit. These again effects of the 80s from Roland synthesizers. ये स्टैंडर्ड टाइप की साउंड्स थी जो आपको मिलेंगी. इंडियन बॉलीवुड के स्कोर्स में भी मिलेंगी आपको ऐसी साउंड. देन देयर इज अ हाई पैड जो बिगनिंग में आता है. As you can see, इसकी volume is like climbing up towards the end. उसका कारण ये है कि भी obviously you're going into main section, so some sounds they need to be, as a section is building up, तो डूबने भी शुरू हो जाएंगी. या you want to create an excited effect during an important sequence of the movie, and you want to create a dramatic effect. So rather than using new sounds every time, आप एक sound को लेकर उसको चढ़ा भी सकते हैं ताकि it creates an exhilarating feeling. So that's what I've done in this case. And this high pad just gives that suspense feeling in sound. Then we come to the pan flute जो यहाँ पे बजता है at this point. So that's again from Retro Keys. So all these are popular sounds. Like I said, there are 100 patches of those sounds which are very heard in 80s music. So ये सिर्फ soundtracks के लिए नहीं है. You can also use these for pop music if you want to, because 80s sound is back. So these sounds you will hear more of now. Then let's come to drums. So drums we have the main kit, I think. Sorry, this is the EP first. I'll show you the EP. So it's an EP sound. It's again sound from Retro Keys. लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा delay डाल रखा है, and that's why it's making it bounce a little. Then you come on to drums. तो main drum section यहाँ से शुरू होता है. You can hear there's no EQing, कुछ भी मैंने कर नहीं रखा. It just sounds great on its own, because the जो drum sounds है वही already EQ'd and they're made to fit well with all your mix and also be powerful. Like the toms are really powerful, so they'll just shake the room when you put them. आपको उनको separately compress करने की ज़रूरत नहीं. They're already sounding great. So Beat Skills again, Retro Hit is a drum machine. You can get beatskills.com से. Then we have this one which is just hats. So सिर्फ hats का patch है, which is just different hi hats, as you can see. Again, I've used a simple stereo delay on this to make them bounce a little. Then you come to toms. So these are the heavy hitting parts of the.
अगेन फ्रॉम द रेट्रोहिट लाइब्रेरीज में 50 किट्स हैं फ्रॉम 1980s. इसमें सेपरेट स्नेयर के ड्राई रिवर्ब्ड किट्स भी हैं, 2 टाइप के रिवर्ब्स वाले किट्स भी हैं, लॉन्गर रिवर्ब, शॉर्टर रिवर्ब. देन टॉम्स के फुल किट हैं, परकशन है, रिवर्स साउंड्स हैं. तो एवरीथिंग इज यूज्ड फ्रॉम दिस प्रीटी मच नेचुरली बिकॉज ये लाइब्रेरी इज कंसाइज एज फार एज दैट इज कंसर्न. कभी क्या होता है, व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस आल्सो ना, यू गेट कंफ्यूज. व्हेन यू हैव सेलेक्टेड लाइब्रेरीज विच यू नो, यू यूज देम एंड यू नो एवरी साउंड, तो इट्स ईजी फॉर यू टू क्रिएट. वर्क फ्लो बन जाता है. लाइक आई क्रिएटेड दिस पीस इन लाइक 10 minutes एंड आई वॉज फ्लोइंग. सो जितना क्लटर आप हटाओगे अपनी लाइफ में से उतना आई थिंक इट बिकम्स बेटर. सो आई ऑलवेज गो विद दैट प्रिंसिपल. आई सेलेक्ट सर्टन थिंग्स फॉर अ प्रोजेक्ट एंड आई जस्ट वर्क विद दैम, अनलेस कुछ कमी है फिर मुझे उठा के कुछ लाना है, देन आई डू इट. बट आई वोंट जस्ट लीव ऑल थिंग्स ओपन एंड waste a lot of time just finding sounds. I'll first listen to sounds, collect them, and then work with them. Then these are the clap sound. Again, this is a great sound on its own. सिर्फ इसमें एक delay डाल रखा है, but reverb is already coming with through retrohit का अपना reverb से आ रहा है. So it's a great sampler, retrohit. Then reverse sound जो यहाँ पे आती है इस point पे, that's from this. Again, no external reverb is used. इसका अपना reverb हमने use किया है हमारे अपने module का, so you can increase decrease the reverb here. So that's pretty much it. These are the sounds. I hope you enjoyed the soundtrack and breakup आपने देखा. If you have any questions, write them below on this post in YouTube. तो अगर आप YouTube पे लिखेंगे then I will be able to answer it. Or if you find the Facebook version of this, you can write on Facebook. Either way, if you ask questions, दोनों social media पे, I will answer them. And because this is one of the new videos I've started doing again. So you have any questions, ask me. Like and share this. Of course, I always request to like and share because जितने लोगों तक ये information पहुंचे अच्छा है. Because हिंदी में, English में, I don't think anybody is doing these kind of advanced tutorials जिसकी who has something to say. Like myself who has a pedigree, I come from a certain background and मैंने काफ़ी काम किया इंडस्ट्री में. So जितने लोग ये इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, you must share it because अगर आप म्यूजिशियन हैं तो डेफिनेटली आपके चैनल पे there are other musicians and the more you help spread this, the more again I will be encouraged to make. So please do like and share. Don't forget to do that. It's very important. मेरी छोटी सी दरखास्त आपसे. And I will see you again. मैं और ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा आपके लिए जल्दी and तब बात करेंगे. फिलहाल आप लिखिए इसमें जो आप जानना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है, लाइक एंड शेयर.